Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए this video जो आपने न्यूज़ सुनी होगी and that is very much important, you know, from the examination perspective also about the monsoon. You must be knowing monsoon is anyway a lifeline of this Indian economy, and hence, you know, like everything that deals with the formation, that deals with the delay, that deals with the prediction, and everything is rather very much important. So आज ये जो news है, this analysis is rather, you know, this day is equally very important for us because monsoon का हमारे life पर भी impact है, and IMD Indian Meteorological Department has predicted, had forecasted more appropriately that for the year 2025 the monsoon will be like above normal monsoon, है ना, above normal monsoon, है ना, and that is a very good news for us. Now, अब in this particular video what we are going to understand then, किस फैक्टर पे IMD ने ये चीज़ एनालिसिस की है, मॉनसून क्या है, अबव नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, देन एल नीनो, ला नीना, देन यू विल फाइंड IOD एंड स्नो कवर. ये सारी फैक्टर्स आज देखेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में. So tune it till the end, watch it till the end, and you will have, you know, some better understanding about the forecasting of the model. Now, देखो guys, IMD has forecasted this year above normal monsoon. Now for that case, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि monsoon होता क्या है ना? So what is monsoon? Monsoon is simply, like अगर इसको simple से term में लिखना है, it is a seasonal reversal of the wind system. ठीक है? It is rather a seasonal reversal of the wind system. Wind system कौन सा है? Trade wind system है. Seasonal मतलब summer और monsoon में. Now for this particular case, अगर इसका phenomena हमको समझना है by means of IT, season and condition, you will find, देखो क्या होता है, in the month of June when perpendicularity is to on the tropic of Cancer, so say from 21st of March till the June, you will find ये जो transition जाएगा, ITCZ would rather shift more towards the northern hemisphere. In such a case, low pressure belt is developed in northwestern part of the India. This low pressure belt is now acting as an attraction point, okay, or magnet I would say rather, for the high pressure system that is developed at the Mascarene High, na, southwestern Indian Ocean, Mascarene High. अब क्या होगा? This winds then will move towards this low pressure belt, and as soon as they crosses the like an equator, इन पर क्या होगा? Coriolis force of northern hemisphere apply होगा, that will rather bend it them towards the southwest direction. ये जो monsoon हो गया हमारा, that is southwest monsoon. ठीक है? That leads to the rainfall for 85% of territory or overall rainfall over in the country. ठीक है? That is what the monsoon. Now the thing is, अब ये जो monsoon वाला phenomena है, you will find that defines the very significance of Indian culture also. ठीक है? इसका culture पे बहुत ज़्यादा impact है और significance. Now see, the thing is, अब क्या है, this terminology that is what used above normal. For that matter, we need to understand कि IMD कौन सी terminologies use करता है in total in order to, you know, like forecast the monsoon. अब देखो पहला एक है LPA, long period average. It means what? Based on 30 years, 50 years of average analysis of the data of monsoon collection, how much is the average rainfall of the region? That is what long period average. अब अगर if you consider, see what is the average rainfall for the country, that is 87 centimeter. 87 centimeter is what average rainfall. इसको अगर mm में consider करेंगे तो 870 mm is what the average rainfall of the country. Now, अब देखो, for this LPA, if amount of rainfall is less than 90%, ठीक है, less than 90%, that year is deficient year. That year is deficient year. Next, if amount of rainfall is 90 to 96%, ये year क्या बन जाएगा? Below normal year. ठीक है, below normal in a sense, 100% is LPA. But 90 से 96% band is rather below normal. Now 96 to 104 is what we consider normal rainfall in a sense. 8% का band होगा where we consider it as a
normal rainfall. Okay, so +4 -4 that it gives you. Then if rainfall is above normal, what does that mean for this particular year? Rainfall is 104 to 110% of the long period average. ठीक है, तो इस बार जो होगा 87 का 104 to 110% एवरेज का in between आएगा. 108 anyway is what given by the IMD. And excess rainfall year is what when rainfall is 110% of LPA. Okay, long period average. So I hope you are now pretty much clear with this forecasting of the monsoons and the terminologies. अब देखो, for the year 2025 forecasting you will find यहाँ पर IMD has considered some factor. IMD अगर forecast कर रही हो, there needs to have some factors, है ना. तो ये factors कौन सा है? Now these are what the list is. See, absence of El Nino for this year 2025, that is what the major or crucial factor I would say जो IMD को prompt कर रहा है above normal. Otherwise it was apprehension that possibly El Nino would develop by the end of the November, December, possibly in the month of January in this year itself. That would lead to, right, I mean 2024 November, December and January 25. So that it would lead to adverse impact on this monsoon rainfall. However, what you will find कि इस बार ये हुआ है कि एल नीनो का डेवलपमेंट इज नॉट फुल स्केल डेवलपमेंट, रादर इट इज नॉट प्रेजेंट एनीवे, राइट. अब एल नीनो क्या होता है दैट वी हैव टू लुक फॉर, है ना. देखो अब एल नीनो क्या है? इट इज कंडीशन दैट डेवलप्स इन द सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक. ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक मतलब ये वाला, वेर इन कोल्ड पेरुवियन करंट, कोल्ड इज रिप्लेस्ड बाय हॉट एल नीनो करंट. ठीक है, एल नीनो करंट से क्या हो रहा है? रिप्लेस्ड हो रहा है. दैट लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक दैट अल्टीमेटली इंपैक्ट्स ऑन द ओवरऑल वाटर सर्कुलेशन और द सर्कुलेशन दैट ड्राइव्स इन द पैसिफिक सी ओशन. एंड व्हाट इसका इंपैक्ट होगा? देखो, ये जो मूवमेंट ड्राइव कर रही है टुवर्ड द साउथ वेस्ट मॉनसून, मैस्कुलिन हाई पे इंपैक्ट होगा और अल्टीमेटली यू विल फाइंड इंपैक्ट ओवर ऑन द इंडियन मॉनसून एल्सो. ठीक है, ये एक अलग सा पॉइंट होगा एल नीनो, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट फिर भी आई हैव ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूं. ठीक है, अब देखो व्हाट हैपन. अब ये तो एक फैक्टर था कि एल नीनो वहां पे नहीं है. व्हाट अदर फैक्टर दैट सपोर्ट्स न्यूट्रल एनसो. नाउ इन दैट केस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनसो फैक्टर इज व्हाट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. सी एक्चुअली this El Nino and La Niña, you will find they act like a oscillatory in nature. ठीक है, oscillatory in nature. तो एक फेज एल नीनो वाली एक्सट्रीम होगी, एक फेज ला नीना वाली एक्सट्रीम्स होगी, एंड दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, राइट. एंड दैट ड्रिफ्टिंग इज व्हाट काइंड नोन टू बी नोन एज एनसो फैक्टर. ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है? दी एल नीनो भी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, ला नीना भी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द कंडीशंस इज लाइक आर वेयर न्यूट्रल एनसो फैक्टर इज व्हाट डेवलप. ठीक है, न्यूट्रल इन अ सेंस फुल्ली एल नीनो भी डेवलप नहीं हो, ला नीना भी नहीं है, हल्का सा. हाउएवर देयर इज फेवरेबल कंडीशंस फॉर ला नीना दैट हैज रादर बीन ऑब्जर्व्ड. ओके, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग कि ला नीना कंडीशन में क्या होगा? ये जो cold Peruvian current है, that is what getting rather strong, and that will drive this circulation in the Pacific Ocean, और ultimately क्या होगा? इसी का impact होगा over on the monsoonal formulation itself. ठीक है, so that is what this ENSO factor and La Nina condition. अच्छा, does this like do this only two factors are working for this? Answer is no. You will find equally next factor what IMD has considered that there is neutral IOD. Okay, neutral IOD. अब यहाँ पे पता होना चाहिए IOD क्या है. 2018-19 प्रीलिम्स में there was question on Indian Ocean Dipole also. ठीक है, अब देखो IOD क्या है? Indian Ocean Dipole. Now what does that mean by Indian Ocean के दो पोल, डाइपोल, है ना. So one pole over in the east, one pole over on the west. You will find इसके दो phases होंगे, एक होगा पॉजिटिव IOD and एक होगा नेगेटिव IOD. See, what positive? When west coast is warm, that is positive IOD. That facilitates the monsoonal condition and rainfall, that is positive. And east coast is cold, ना? Australian coast is cold. And negative IOD क्या होगा? When west coast is cold
and east coast is warm, and that rather creates the conditions unfavorable for the monsoonal rainfall altogether, and that is the IOD conditions, right? ये भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली इट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉनसून और अपोज द मूवमेंट ऑफ मॉनसून, बट यहाँ पर भी क्या है, न्यूट्रल आईओडी डेवलप हो रहा है, दैट इज नॉट एनीवे रिलेटेड टू व्हाट पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये एक फैक्टर है जो एक सपोर्ट कर रहा है। एंड वन फैक्टर फर्दर, दैट द फिफ्थ वन, यू विल फाइंड द स्नो कवर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यूरेशिया। सी, it has been observed कब, in the month of January, February and March of this year itself, जिस भी ईयर का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, that snow cover कितना है over in the northern hemisphere, see over in the Europe and Eurasian part, Siberian part, you will find यहाँ पर snow cover कितना है, that is equally leading to impact on monsoon cover. Now what kind of relationship do we have observed? That snow cover over in the northern hemisphere is inversely proportional to monsoon rainfall, है ना? So अगर स्नो कवर ज्यादा होगा तो मॉनसून रेनफॉल कम होगा, अगर स्नो कवर कम होगा मॉनसून रेनफॉल ज्यादा होगा। एंड व्हाट फॉर 2025 स्नो कवर हैज ऑब्जर्व्ड डिक्लाइन, एंड दैट इज व्हाट कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव साइन फॉर द ओवरऑल मॉनसून रेनफॉल। सो आई होप ये जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है मॉनसून का for the year 2025 that IMD has given is pretty much clear to you. I'll again bring out videos, just to make you more aware about this monsoon and the related phenomena. If you like this video, so please hit the subscribe button and share it with your near and dear. Thank you.